आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं एंड हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हमें क्या करना चाहिए। आई विल डिस्कस दिस टुडे। किन लोगों को बूस्टर लेने की ज़रूरत है, किन लोगों को नहीं है एंड हमें हमारा बेसिक प्रोटोकॉल अभी क्या होना चाहिए। आई एम जस्ट गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट। So, before I start the day, I would request Anita ji to please come forward and conduct the morning prayer and kick off our day. थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी। आज का दिन बुधवार 20 अप्रैल 2022। सर्वप्रथम स्वर्गीय डॉक्टर के अग्रवाल जी को मेरा शत नमन व HCFI परिवार को सादर प्रणाम। आज के सेशन की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना के साथ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा, तू ही राम है। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवहन, कहीं राम धुन, कहीं आवहन, विधि वेद का है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तू ही राम है। थैंक यू। ओवर टू डॉक्टर मीनाक्षी प्लीज। Thank you, Anita ji, for that lovely prayer this morning and doing these Sarvadharma prayers with us, because this is strongly a sentiment that HCFI shares. So once again, thank you. And let us now move on to our topic of the day. It's going to be a very short session. हमारा instant reaction अभी हमें क्या करना चाहिए? What are the very few basic things that we need to do at the moment is what we are going to discuss. I think all of you already know, but I think kabhi repetition jo hai, that is also required. So let's move forward and see why we are discussing this. So Delhi is logging 632 fresh cases. So this is quite high as compared to maybe 10 days ago. And I'll just be seeing the graph shortly. But yes, of course, on Monday there was a 7.72 increase, percent increase, and on Tuesday it was a 4.42. But I think that we need to just take these numbers with a pinch of salt. मैं हमेशा कहती हूँ कि numbers के ऊपर ना जाएं. आपके आसपास जो लोग हैं, I am sure you're finding out that there are people who are positive. We are getting more cases in the OPD, and yes, the cases are on the rise, and now it is absolutely imperative कि हम vigilant रहें. मुझे नहीं लगता कि we will be seeing a big wave, but yes, a little peak is something that we may expect at the moment. बहुत लंबे समय तक चलेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता. ओमिक्रॉन भी काफी इन्फेक्शियस था, बट वी बाउंड अप विद दैट वेरी सून. सो आई थिंक दैट अभी भी आई डोंट थिंक दैट वी विल बी सीइंग अ wave per se, but let's wait and watch and hope for the best. So अगर हम महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र में भी काफी केसेस जो हैं, they are reporting 137 cases, which is more than double of Monday's edition. तो इनके यहाँ पे भी केसेस जो हैं काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. This is, of course, let's remember that this is all of Maharashtra, and we are seeing this many cases here. So the cases definitely all over the country, and जहाँ जहाँ पिछली waves का प्रभाव आया है, वहाँ वहाँ हमने जो केसेस हैं उनको हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं. So let's move forward. What do we have to be careful about? Who is at risk? Let's do this. Let me think aloud with you and write them down. I don't think I've written it down yet. So let me write it down. So if your age is more than 60, sorry, I have written. If your age is more than 60, if your CRP is consistently high,
and comorbidities discussed. Excuse me. Active cancer. अगर आप अभी भी कोई कैंसर का ट्रीटमेंट अभी आपको है, कैंसर है, आप उसका ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, then you are at risk. So there I have a few more. Let me just let me show you this. ये so these were the indications for बूस्टर, किन लोगों को बूस्टर लेना चाहिए. सो इसमें भी अगर आपका कहीं पे भी नाम आता है तो यू आर एट स्लाइटली मोर रिस्क. तो कौन है ये लोग, देखते हैं. हार्ट फेलियर विथ हॉस्पिटल एडमिशन इन द पास्ट ईयर. अगर आपका हार्ट फेलियर हुआ है और आपको एडमिट होने की नौबत आई है. पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट, अगर आप कुछ कार्डियक ट्रांसप्लांट आपका हुआ है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है, 40% फंक्शनिंग है आपकी, मॉडरेट और सिवियर वैल्वुलर डिजीज. तो हार्ट डिजीज में आपके जो वैल्व्स हैं, वैल्व्स में कहीं प्रॉब्लम है, बचपन से ही आपको कोई हार्ट डिजीज है, अगर आपको आपकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, या फिर आपको बाईपास सर्जरी हुई भी है, या फिर स्टेंट्स लगे हुए हैं, अभी कुछ दिनों में आपको हार्ट अटैक आया है, आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये सब इकट्ठे हैं, you are at a higher risk and you might consider a booster dose if you have not been infected in the last 3 to 6 months. Angina and hypertension, अगर आपको है, अगर आपको angina अभी भी हो रहा है, you are on treatment, you might be at a slightly more risk, not as much as the previous line, but yes, आपको हल्का रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है. अगर आपको कोई स्ट्रोक हुआ है जो डॉक्यूमेंटेड है इन द सीटी और एमआरआई along with hypertension and diabetes on treatment, then also you are at increased risk. Pulmonary artery hypertension, आपके अगर lungs में जो arteries हैं, they are giving you some trouble, you are also at higher risk. 10 साल से ज्यादा आपको डायबिटीज है और इसके साथ में आपको बीपी की बीमारी भी है और आप दवाइयां ले रहे हैं इसके लिए, you are at a higher risk. किडनी, लिवर और सम सॉर्ट ऑफ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया है पिछले, if you are a transplant patient anyhow, or if you are on the waiting list, then even if you are on the waiting list, which means that आपके organs जो हैं ये सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, then also you are at a risk. End stage kidney disease अगर आपको है, then also you are at higher risk. अगर आप लंबे समय तक steroids ले रहे हैं, you are at a higher risk of developing a severe disease. अभी ये नौबत नहीं आ रही है कि बहुत लोग सीरियस हो रहे हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये एक प्रेपरेशन हम एक स्टार्ट कर रहे हैं. इफ वी सी अ पीक, these people need to be careful. इनको थोड़ा सा moderate बीमारी होने की आशंका होती है, so then it would be a good time to get boosted. These are the people who need to get boosted. I don't believe that हमें universal booster की जरूरत है कि every single person needs to get boosted. There are certain sections in the society, the people who are vulnerable, these are the people who can consider a booster after speaking to their doctor. So moving on in this list, severe respiratory disease अगर आपको हुई है, आपके जो लिवर हैं वो सिरोसिस का एक irreversible stage से ऊपर वो जा चुके हैं, कोई भी ब्रेन कोई भी ब्लड रिलेटेड कैंसर है, या फिर बोन मैरो का फेलियर है, थैलेसीमिया मेजर है, नॉट माइनर, माइनर इज नॉट एट इंक्रीज्ड रिस्क, थैलेसीमिया मेजर है, you might just get a severe form of the disease. So it is imperative to be careful. It is imperative to treat these people early. It is imperative to diagnose these people early. So I would just move on and say कि अगर आपका CRP consistently high रह रहा है, ये एक key है. This is one of the key things that would be high in most of these people. अगर ये constantly 5 के ऊपर है, then you need to be a little careful with your COVID protocols. आपने करना क्या है? There is no change in this. It still remains the same. सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, I understand that the world is exhausted. No one wants to take any more leaves.
Just stay at home if you are unwell. That is it. If you are having any symptoms related to COVID, टेस्ट कराओ या ना कराओ, CBC CRP कराओ या ना कराओ, कृपया घर पे बैठे रहें. Don't leave your room, don't leave your house, don't infect others, don't bring in the wave. So stay at home if you are unwell. आप अगर अनवेल नहीं हैं, if you are getting out and crowded जगह है, वहाँ पे मत जाइए. Do not go there. You will be exposing yourself to the risk of getting COVID-19. You will be exposing people at your home to COVID-19. And even if it is not a very severe disease at the moment, it is still a problem, because आपको उसमें social distancing, आपको उसमें आपको isolation करना पड़ेगा. There will be like a series of tests that you need to get done, and there are a lot of post-COVID problems that come along with COVID, which is something that you need to avoid. And so just avoid crowded places altogether. Do your work from home. Work जो भी आपको शॉपिंग रिलेटेड काम है, या फिर कोई भी आपको कोई डॉक्टर से आपको सलाह करनी है, you can do it online. So try doing that. If your office requires you to come to work, go to work. Don't stop that unless you are unwell, but just ensure masking and hand hygiene. आपको ये जो simple basic things हैं, these have to be there in place for some time. If at all there is a fourth wave, it is absolutely sure that fifth wave nahi aayegi. I think that I can just put my foot down and say that that will not happen. Fourth wave, I am a little unsure. मेरा मन नहीं मानता कि चौथी वेव आएगी. एक छोटी सी पीक हमें दिख सकती है, इसको हम वेव का रूप हो सकता है ना देना पड़े. But let's see what is going to be the next week. तक we will have more clarity on this. Make sure that you have taken 2 doses of the vaccine. Booster अगर नहीं लिया है, see the indications that I have just given you. These are the indications. If you are having these problems, then consider a booster, speak to your doctor, and if it is indicated, go ahead with the booster. So पहले मैंने एक बार एक booster की बात करी थी. I had said that the factors to be considered when you're developing a booster vaccination policy, हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि करंट सिचुएशन क्या है. सो एज ऑफ नाउ द केसेस आर राइजिंग, सो द करंट सिचुएशन इज वारंटिंग अ बूस्टर. उसके बाद में क्या, सो दिस इज मे बी इट इज टॉकिंग एट द मैक्रो लेवल, सुपर मैक्रो लेवल मे बी, एंड ये बात हो रही है कि ग्लोबल इक्विटी एंड सप्लाई. सो क्या पूरे वर्ल्ड में क्या हमने वैक्सीनेशन कर दी है. अगर हमने पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन कर दी है एंड 2 डोजेस सबको एक बेयर मिनिमम जो है ये सबको मिल गया है, देन वी कैन टॉक अबाउट अ थर्ड एंड अ फोर्थ डोज. So as of now, of course, that global equity is not there. But if the cases are really rising, if there is any indication कि disease or severe है, so that will come into the current situation and that will warrant us to say कि हाँ जी आपको हमें universally booster लेना चाहिए. नहीं तो we have to use the case optimization. We have to see कि एक individual को जरूरत है कि नहीं, and यहाँ पे डॉक्टर का discretion काम आएगा. सो अगर हम सीडीसी की बात माने तो जो भी 50 साल से उम्र जिनके ऊपर है, दे शुड गेट अ बूस्टर डोज. एंड जहाँ पे लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग्स में जो रहते हैं, इवन दे शुड गेट, जो दे हु पीपल हु लिव वेरी क्लोजली, so yes, they can consider a booster because they are at a higher risk of developing COVID-19. But again, I think that I hold my reservations with these comments. I honestly think that this is the one thing that we need to watch. CRP, if your CRP is high for any reason, if it is more than 5, then I would suggest that you might be at a higher risk of developing a moderate to severe disease, and you should consider a booster. So this is what I would like to say to you. Should we send kids to school when positive cases are in school but not in class? Are you going to work? If you are going to work, then I think that you can send your kids to school as well. What I have heard is that even in the primary school, the kids are wearing their mask and they are abiding by the COVID protocols. The teachers are ensuring. I think that we have suffered enough when it comes to education, and I am in favor of sending kids to school. I am sending my kids to school, and I would rest it at that.
बट अगेन अगर आपके घर में कोई बहुत vulnerable patient है, which I don't have, then you can take a call on whether or not you want to send the kids to school. I believe there are a lot of schools who are following the hybrid method, wherein some people are going to school and some people are attending it online. So you can take a call, but I am in favor of sending kids to school at this point. Should we send below 12-year kids school when positive cases in school but not in class? So इनका सवाल थोड़ा अलग था. I think I did not read it properly. तो सवाल ये था कि पॉजिटिव केस हैं स्कूल में बट क्लास में नहीं है. I still think that I would, at that point, I would still send my kids to school. I have a 6-year-old and a 4-year-old. I would still send my kids to school. अगर क्लास में कोई भी पॉजिटिव नहीं है, I would take that risk. So Anita Gupta Goyal ji कह रहे हैं, can cancer patients take boosters? Yes, they can take boosters. You most likely, if you are if you have active cancer, which means that आपको अभी भी treatment आपका चल रहा है, then you are at an increased risk of developing a moderate to severe disease, and you should consider the booster. So on this note, I would like to end the show today. Thank you everyone for joining in. Wanted to keep it short and sweet. We will be talking about COVID for the remaining few days, and let's see how it goes. I really hope we are not in line for a boost for a wave, but only time will tell. So Atul Mulay ji का एक क्लास सवाल ले लेते हैं. After taking 2 doses, we got attack of Omicron. It means we got booster through Omicron in our family. Is it required to take booster? I don't think अगर आपको Omicron बहुत recently हुआ है 3 से 6 महीने के बीच में, then I don't think you need to take the booster at the moment. But again, अगर कोई high risk patient है घर में, then you can consider. But at least 90 days आपको Omicron के बाद में wait करना चाहिए. So that's all from us today. Thank you everyone for joining in. We'll be back.